जय जगन्नाथ वेलकम करुचे आपण मानकु आमर ए क्वेश्चन आंसर सीरीज रो आउ गोटे सेशन को आज रो ए सेशन रे आमे किछि रैपिड रिवीजन बेस रे किछि वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करिबा जो गुडा कि आमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे देखिया पई गले बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन किछि बछा बछा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि आपण मानक पई तो वीडियो को स्टार्ट रु एंड जाय देखिबे सबु क्वेश्चन रो आंसर आपण माने कमेंट रे कहिबे तो आउ डेरी न करी चलंतो स्टार्ट करिबा आज रो सेशन फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैज एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपरकैलेमिया को केस रे हाइपरकैलेमिया देखा जिवो क्रॉन्स डिजीज कुशिंग डिजीज chronic heart failure end stage renal disease आंसर करंतु समस्ते तो ये कौन देला को स्टेज डिजीज रे हमरो हाइपरकैलेमिया देखा जिवो ना एंड स्टेज रेनल डिजीज कौन पाई ना एंड स्टेज रेनल डिजीज रे कौन हुए किडनी इज अनेबल टू excrete पोटेशियम जो फल कि कौन हम आमर ना इनक्रीज्ड पोटेशियम इन ब्लड तो आमर ब्लड रे पोटेशियम इनक्रीज हेले कौन हम ना हाइपरकैलेमिया कुशिंग डिजीज एंड क्रॉन्स डिजीज रे आमर कौन हम ना हाइपोकैलेमिया देखा जिवो हाइपोकैलेमिया चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the microorganism that is usually a part of the normal vaginal flora but can cause meningitis in newborn is Corynebacterium species Candida albicans group B streptococci staphylococcus epidermidis को नॉर्मल vaginal flora meningitis cause करूची ना ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ऑप्शन सी हमरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑल आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट मेनिंजाइटिस रो क्लिनिकल फीचर कोन कोन एंड एक्सेप्ट कोटा मेनिंजाइटिस रो क्लिनिकल फीचर नुह नकल रिजिडिटी पोर फीडिंग हाई पिच क्राई कॉन्स्टिपेशन तो हमरो मेनिंजाइटिस रो क्लिनिकल फीचर्स कोटा नुह ना कॉन्स्टिपेशन नुह नकल रिजिडिटी पोर फीडिंग एंड हाई पिच क्राई ए तीनटा हमरो रहउची मेनिंजाइटिस रो क्लिनिकल फीचर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हैव बीन लेड डाउन बाय WHO अकॉर्डिंग टू WHO केतेटा हमरो हैंड हाइजीन रो केतेटा मोमेंट्स रहउची 7 8 6 5 अकॉर्डिंग टू WHO हमरो केतेटा मोमेंट रहउची हैंड हाइजीन रो ना 5 मोमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन कार्डियोमेगाली कार्डियक फेलियर हार्ट अटैक ऑल ऑफ दिस तो कौन हम यार करेक्ट आंसर ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस specifically for the management of convulsions in eclampsia eclampsia रो ड्रग ऑफ चॉइस कौन डाइजेपाम पेथिडिन मैग्नीशियम सल्फेट एम्पिसिलिन आंसर करंतु समझते तो हमरो एक्लाम्सिया रो ड्रग ऑफ चॉइस कोन हबो ना मैग्नीशियम सल्फेट एठी डाइजेपाम कोन रहउची हमरो ना एटा होची बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप ऑफ ड्रग पेथिडिन कोन रहउची ना हमरो ओपियोइड एनाल्जेसिक एम्पिसिलिन कोन रहउची ना एंटीबायोटिक
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए क्लाइंट विथ साइकोटिक डिप्रेशन इज रिसीविंग हालोपेरिडोल कौन है ना गोटे पेशेंट रो साइकोटिक डिप्रेशन थिला पेशेंट रो कौन चलुची ना हालोपेरिडोल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स इज एसोसिएटेड विथ हालोपेरिडोल हालोपेरिडोल रो साइड इफेक्ट्स कौन एकाथेसिया कैटराक्ट्स डायफोरेसिस पॉलीयूरिया हालोपेरिडोल हमरो कौन करूची ना इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर को एटा ब्लॉक करूची जहा द्वारा कि तारो साइड इफेक्ट कौन होची ना एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम्स तो ये कौन आसीबा हमरो पेशेंट रो कौन साइड इफेक्ट होबो ना एकाथेसिया Which of the following immediate management to restore blood pressure and peripheral circulation in a patient with multiple fracture and fluid loss would be? कौन आमर इमिडिएट मैनेजमेंट रहिबो ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करिया पई एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन को इंप्रूव करिया पई जोतरे कि पेशेंट रो कौन अछि ना मल्टीपल फ्रैक्चर अछि एंड तार फ्लूइड लॉस होईछि RL infusion, blood transfusion, NS infusion, dextrose 5%. तो हमारा immediate management कौन रहिबो ना RL infusion. Next question देखिबा Which of the following hormone is also known as emergency hormone? को हार्मोन को हमें emergency hormone कहूचे cortisol, growth hormone, prolactin, adrenaline. आंसर करंतु समझते को हार्मोन को हमें इमरजेंसी हार्मोन कहूचे ना ऑप्शन डी एड्रेनालिन A lung disease caused by prolonged inhalation of cotton fiber dust is bagosis, bicyanosis, farmer's lung, pneumonia. आंसर करंतु समझते कॉटन फाइबर डस्ट द्वारा को लंग डिजीज हमर होची ना ऑप्शन बी बाइसिनोसिस बेगोसिस का द्वारा होची ना सुगर केन डस्ट द्वारा सुगर केन डस्ट फार्मर्स लंग्स का द्वारा होची ना ग्रेन डस्ट हाइट मेजरमेंट ऑफ 2-year-old चाइल्ड इज डन बाय गोटे 2-year-old चाइल्ड रो हमें हाइट केमती मेजर करिबा स्टेडियोमीटर इन्फेंटोमीटर गनियोमीटर रिफ्रैक्टोमीटर तो 2-year-old चाइल्ड रो हमें हाइट केमती मेजर करिबा ना स्टेडियोमीटर रे तार हाइट मेजर करिबा A nurse is preparing the client's morning NPH insulin dose and notice a clumpy precipitate inside the insulin vial. The nurse should कौन है ना गोटे नर्स पेशेंट रो मॉर्निंग एनपीएच इंसुलिन दवा पई प्रिपेयर करूथला से भाइल रे कौन देखिला ना भाइल टा क्लम्पी हेची एंड प्रेसिपिटेड हेची तो नर्स कौन करिवो ड्रॉ अप एंड एडमिनिस्टर द डोज shake the vial in an attempt to disperse the clumps draw the dose from a new vial warm the bottle under running water to dissolve the clump आंसर करंतु समझते तेटी नर्स कौन करिवो ना जो भाइल टा अछि ताकू डिस्कार्ड करिकी से कौन करिवो ना ड्रॉ द डोज फ्रॉम न्यू भाइल Dampa is a injectable contraceptive given every 3 weeks, 3 months, 2 months, 2 years. हमरो डंपा जो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव डिवाइस टा रहउची सेटा को हमें केते इंटरवल रे दबा आंसर करंतु समझते डंपा कोन ना डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट
एटा हमरो इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव रहउची जोटा को कि केमती दिया जाउची ना एवरी 3 मंथ्स रे दिया जाउची केते एमजी दिया जाउची ना 150 एमजी दिया जाउची 150 एमजी दिया जाउची एंड रूट कोन रहउची ना इंट्रामस्कुलरली दिया जाउची हमरो कोटा राइट आंसर हबो ना ऑप्शन बी 3 मंथ्स nurse on PICU advised to give 400 ml fluid to be given 8 hours. Drop factor is 60 drop per minute. Nurse will run this fluid at what flow rate? तो ये हमरो कौन कौन पैरामीटर देला हमको एठी वॉल्यूम देइची वॉल्यूम केते देला हमरो ना 400 ml टाइम केते देला ना 8 hours एंड ड्रॉप फैक्टर केते देइची ना 60 ड्रॉप फैक्टर केते देला 60 ड्रॉप्स पर मिनिट तो हमरो फ्लो रेट कैलकुलेट करिया पई हमरो फार्मूला कोन ना वॉल्यूम इन ml इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनिट एटी हमरो वॉल्यूम केते देला ना 400 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर केते देइछि हमरो 60 ड्रॉप्स 60 हला एंड टाइम हमें मिनिट रे नबा टाइम केते देइछि हमरो 8 आवर्स 8 इनटू मिनिट रे नबा 60 करिवा 60 60 कटि गला 8 5 40 50 50 ड्रॉप्स पर मिनिट तो हमरो कोड आंसर आसीबो ऑप्शन बी राइट आंसर 50 ड्रॉप्स पर मिनिट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कार्डिनल साइन ऑफ cardiac arrest include all of the following except apnea dilated non-reactive pupils cold clammy skin absence of carotid and femoral pulse तो ये हमको एक्सेप्ट पचारिची तो हमरो कोउटा कार्डिनल साइन नुह कार्डियक अरेस्ट रो ना कोल्ड क्लैमी स्किन एपनिया हमरो हबो एपनिया कोन हबो ना एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग एंड डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स भी हबो काहे कि ना इटा हमरो कोन करिवो ना इंडिकेट्स lack of blood flow and oxygen lack of blood flow and oxygen to the brain and absence of carotid and femoral pulse एटा त हमरो मेजर साइन रहिबो कोल्ड क्लामी स्किन को केस रे देखा जीवो ना जते बेले पेशेंट रो एटा कोन इंडिकेट्स करबो हमरो ना इंडिकेट्स पोर पेरिफेरल सर्कुलेशन और शॉक केस रे देखा जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is a mimetic drug atropine adrenaline novocaine silver nitrate आंसर करंतु समस्ते कोउटा हमरो मिमेटिक ड्रग रहइबो ना ऑप्शन ए एट्रोपिन मिमेटिक ड्रग रो काम कोन ना टू डायलेट pupil to dilate the pupil of the eye next question देखिबा the normal newborn hemoglobin level is newborn रो normal hemoglobin level केते 17 to 20 gram per dl 12 to 14 gram per dl 10 to 12 gram per dl 20 to 25 gram per dl तो न्यूबॉर्न रो हमरो नॉर्मल हेमोग्लोबिन केते रहइबो ना 12 to 20 ग्राम पर डीएल
most sensitive index of the health of a community is infant mortality rate, MMR, crude birth rate, crude death rate. कम्युनिटी रे मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ कौन रहिबो ना इन्फेंट मोर्टालिटी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फ्लूइड ऑफ चॉइस इन बॉर्न पेशेंट इज बॉर्न पेशेंट रो फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन रहिबो 0.45% नॉर्मल सलाइन 0.25% नॉर्मल सलाइन 3% नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट. आंसर करंतु समझते बॉर्न रो फ्लूइड ऑफ चॉइस कौन रहिबो ना रिंगर लैक्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following anti-tubercular drugs causes red orange discoloration of urine. कौ एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग्स रेड ऑरेंज यूरिन रो कलर टेकु रेड ऑरेंज करूची आइसोनियाजाइड स्ट्रेप्टोमाइसिन इथाम्बुटल रिफाम्पिसिन. आंसर करंतु समझते कौन है ना रेड ऑरेंज यूरिन डिस्कलरेशन कौ एंटी-ट्यूबरकुलर ड्रग करूची ना रिफाम्पिसिन. आइसोनियाजाइड कौन कॉज करूची ना पेरिफेराल न्यूरोपैथी स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन कॉज करूची ना ऑटोटॉक्सिसिटी. इथाम्बुटल कौन करूची ना ऑप्टिक न्यूराइटिस. absence of bowel sounds and abdominal distension after abdominal surgery indicate. abdominal surgery परे पेशेंट रो बावेल साउंड एब्सेंस होची एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होची जोटा कि कोन इंडिकेट करिवो हेमोरेज इंटुससेप्शन पैरालाइटिक इलियस फ्लैटुलेंस. तो आफ्टर सर्जरी परे जेतेबेले पेशेंट रो बावेल साउंड एब्सेंट होची कि पेशेंट रो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होची सेटा हमको कोन इंडिकेट करूची ना पेशेंट रो पैरालाइटिक इलियस हेची. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा unwanted but unavoidable pharmacodynamics effect of a drug at the therapeutic dose is known as hypersensitivity, side effects, toxic effects, idiosyncrasy. आंसर करंतु समझते कौन है ये ना अनवांटेड बट अनएवॉइडेबल फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग कौन कहा जाउची ताकू ना साइड इफेक्ट्स. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहा कहा जाउची ना एन अल्टर्ड और एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन टू ए ड्रग. टॉक्सिक इफेक्ट कहा कहा जाउची ना हार्मफुल effect resulting from an excess dose. idiosyncrasy कहा कहा जाउची ना abnormal reaction to a drug unique to an individual. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is the organism that causes peptic ulcer disease. peptic ulcer disease को organism cause करूचे staphylococcus, corynebacterium, helicobacter pylori, streptococcus. आंसर करंतु समझते पेप्टिक अल्सर डिजीज को ऑर्गेनिज्म कॉज करूची ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. स्टाफाइलोकोकस कौन करूची ना न्यूमोनिया, स्किन इन्फेक्शन एंड बोन इन्फेक्शन. कॉर्निबैक्टेरियम कौन कॉज करूची ना डिप्थेरिया.
स्टेफाइलोकोकस कौन कज करुची स्कारलेट फीवर एंड थ्रोट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा when the amount of amniotic fluid exceeds 2 liter the condition is called as जेतेबेले amniotic fluid 2 liter रु बेसी होची ताकू कोन कुहा जाउची oligohydramnios polyhydramnios bag of waters amnionitis कौन हम ना आमर एक्सेस जितेबले amniotic fluid होची ताकू polyhydramnios कुहा जाउची जितेबले amniotic fluid आमर रिड्यूस होची सेतेबले कौन कुहा जाउची ना oligohydramnios। limit for registration of birth in India is 7 days 21 days 14 days any of the above। इंडिया रे हमरो बार्थ पई रजिस्ट्रेशन केते दिन रहउची ना 21 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन आइडेंटिकल ट्विन where the fetus share common chorion the number of placenta is आइडेंटिकल ट्विन रे fetus सेतेबेले शेयर करूची कॉमन कोरियन तार रहउची सेतेबेले तार प्लासेंटा केतेटा रहिबो 1 2 मोर देन 2 2 एंड फ्यूज्ड केतना यारो केतेटा प्लासेंटा रहिबो ना 1 प्लासेंटा। आइडेंटिकल ट्विन रे कॉमन कोरियन जेतेबेले थिबो ताको कोन कुहा जाउची ना मोनोजाइगोटिक मोनोकोरियनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा sports person enhance mental and physical capabilities by taking anabolic steroids caffeine whiskey high calorie food ना कौन हबो anabolic steroids। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the silent feature of nurses records include the following except written with ink or paper complete clear and concise countersigned by doctor should not have overwriting कौन हैला ना नर्स जेतेबेले रेकॉर्ड मेंटेन करूची कोउटा हमरो प्रायोरिटी नुह written with ink on paper रहिबो complete clear concise भी रहिबो should not have overwriting भी रहिबो बाकी हमरो काउंटर साइन बाय डॉक्टर हबो नाही। काउंटर साइन बाय डॉक्टर माने कोन ना डॉक्टर आमे जो फर्जी सिग्नेचर करूचे। the ability of the human body to defend itself against a pathogenic agent resistance tolerance immunity adaptation कौन हबो ना immunity। The urinary output of patient is the best indicator of severity of urine tract infection, level of consciousness, states of kidney function, status of medication। ना पेशेंट रो यूरिन आउटपुट टा को पई हमरो बेस्ट इंडिकेटर रहउची ना कौन रहउची स्टेट्स ऑफ किडनी फंक्शन पेशेंट रो किडनी फंक्शन को असेस करिया पई हमें यूरिन आउटपुट मेजर करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the fluid and electrolyte balance in a patient can be easily assessed by patient ro fluid and electrolyte balance केमिति हमें assess करिबा blood pressure pulse rate urine output all of the above हमें patient रो electrolyte balance fluid and electrolyte balance assess करिया पई patient रो हमें blood pressure भी चेक करिबा पल्स रेट भी चेक करिबा यूरिन आउटपुट भी चेक करिबा तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा यूजिंग ग्लोव्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट केयर एक्टिविटी को पेशेंट को केयर देला बेले हमें ग्लोव्स यूज करिबा हमरो मैंडेटरी रहिबो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन
पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, फिजियोथेरापी, रेकॉर्डिंग वाइटल्स। आंसर करंतु समस्ते। तो आमे सबु केस रे ग्लोव्स यूज करि परिबा, किंतु एब्सोल्युटली मैंडेटरी हमरो को केस रे रहइबो ना पेरिनियल केयर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ परे जतबेले आमे पेशेंट को पेरिनियल केयर दोचु सेतेबेले आमे ग्लोव्स यूज करिबा हमरो मैंडेटरी रहइबो। नॉर्मल यूरिनरी आउटपुट इज एनीवेयर बिटवीन, नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते रहइबो 0.5 to 1.5 ml per kg per hour, 0.1 to 0.5 ml per kg per hour, 1.0 to 5.0 ml per kg per hour, 1.5 to 5.0 ml per kg per hour। आंसर करंतु समस्ते। तमरो नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते रहइबो ना 0.1 to 0.5 ml per kg per hour। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। कोउटा हमरो माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह। विटामिन ए, जिंक, प्रोटीन्स, विटामिन सी। आंसर करंतु समस्ते। तमर एठी नोट पचारिछि कोउटा हमरो माइक्रोन्यूट्रिएंट नुह ना प्रोटीन्स हमरो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नुह। प्रोटीन कोन रहउछि ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, amongst fats the category that should be minimally consumed for a healthy body are monosaturated fats, polysaturated fats, saturated fats, none of these। amongst fat जो फैट गुडा देइछि को फैट आमे बॉडी हेल्दी बॉडी रे कंज्यूम करूछि ना कोन हबो ऑप्शन सी सैचुरेटेड फैट्स। amongst the following which is correct measurement of urinary output। urinary output रो correct measurement कोन रहउछि 30 ounce, 1 cup, 300 ml, 1 quart। आंसर करंतु समस्ते। तो यूरिन आउटपुट को करेक्ट मेजरमेंट कोन रहबा हमरो 300 ml। यूरिनरी आउटपुट को आमे तार को यूनिट रे मेजर करूछु ना ml और cc रे मेजर करूछु। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। The most common micronutrient deficiency in India is, इंडिया रे मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोउटा रहउछि आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, आयरन। तो इंडिया रे हमरो मोस्ट कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोन रहउछि ना आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट व्हिच डायटरी कंपोनेंट। हमर जो पेप्सिन एंजाइम रहउछि सेटा को डायटरी कंपोनेंट देखि डाइजेस्ट होउछि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। तो हमरो पेप्सिन रहउछि पेप्सिन केमती डाइजेस्ट होउछि ना प्रोटीन द्वारा पेप्सिन डाइजेस्ट होउछि। फैट हमरो केमती डाइजेस्ट होउछि फैट डाइजेस्ट बाय लाइपेज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट बाय amylase and vitamins हमरो कोन रहउछि ना absorbed directly without mechanical digestion by enzyme, without mechanical digestion by enzyme। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, the most abundant tissue in the human body is, ह्यूमन बॉडी रो मोस्ट abundant टिश्यू कोउटा रहइबो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। तो हमरो ह्यूमन बॉडी रो मोस्ट abundant टिश्यू कोन रहइबो ना ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा,
quality assurance in nursing is concerned with adequacy of care, practice ratings, standard of practice, organizational practice। तो आमर नर्सिंग रे क्वालिटी एश्योरेंस कौन रहिबो ना स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, डिफॉर्मिटी ऑफ डेस बोन रिजल्टिंग इन स्प्रेंगलेस सोल्जर। कौ बोन रो डिफॉर्मिटी हेले स्प्रेंगल्स सोल्जर देखा जाए। स्कैपुला, रेडियस, अल्ना, टिबिया। आंसर करंतु समस्ते। स्प्रेंगल सोल्जर कहा को कुआ जाउची ना इट इज ए congenital skeletal abnormality, skeletal abnormality characterized by undescended or abnormally high and hypoplastic scapula। तो कौ बोन डिफॉर्मिटी हेले स्पेंगल सोल्जर देखा जाए ना स्कैपुला डिफॉर्मिटी हेले। स्मॉलपॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन किए बाहर करथिले लुइस पास्चर, पॉल यूजेनी, एडवर्ड जेनर, जॉन स्नो। तो स्मॉलपॉक्स वैक्सीन किए इन्वेंट करथिले ना एडवर्ड जेनर। लुइस पास्चर को वैक्सीन इन्वेंट करथिले ना रैबिस एंड एंथ्रैक्स। जॉन ये होचंती हमरो फाउंडर ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी। एमोइबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, एमोइबियासिस कहा द्वारा ट्रांसमिटेड होची फिको ओरल रूट, वेक्टर बोर्न, पेरेंट्रल, एयरबोर्न। तो एमोइबियासिस केमते ट्रांसफर होची हमरो ना फिको ओरल रूट द्वारा एमोइबियासिस ट्रांसफर होची। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ vitamin D is found in which among the following? कोउथिरे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी देखा जाउची लिवर, चीज, एग यॉक, कॉड लिवर ऑयल। तो विटामिन डी हमरो कोउथिरे बेसी देखा जाउची ना कॉड लिवर ऑयल रे बेसी विटामिन डी देखा जाउची। 3 Ds डायरिया, डिमेंशिया and dermatitis are the characteristic of which deficiency disorder? को deficiency disorder रे डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस देखा जाउचे। थायामिन, बायोटिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन। तमरो को विटामिन डेफिशिएंसी रे ना नियासिन डेफिशिएंसी रे 3D साइन देखा जाउची जो कि कोन को जाउची ना पेलिग्रा। पेलिग्रा डेफिशिएंसी रे हमरो 4D साइन देखा जाए। डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस एंड लास्ट वन इज डेथ। थायमिन डेफिशिएंसी रे हमरो कोन देखा जाउची ना बेरी बेरी। बायोटिन डेफिशिएंसी हेले हमरो कोन देखा जाउची ना हेयर थिनिंग हबो, हेयर थिनिंग, स्किन रैशेस एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स।
राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी रे कौन देखा जाउची ना एंगुलर चिलाइटिस ग्लोसाइटिस एंड स्टोमाटाइटिस। आजिर सेशन को एठी एंड करिबा। आपण मानकु केमती लागिला आजिर सेशन कमेंट रे कहिबे। हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु एंड शेयर करंतु। एमती इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किछि आपण मानक पय डेली आसीबो। तो आज पय एतिकी। थैंक यू।